Assalamu alaikum, my name is Eman Shaheen and I have recently completed my MPhil in chemistry. Today the topic I'm gonna discuss is one of my favorite topics, supercapacitors. In this lecture we will discuss what are supercapacitors, how they work, their types and application. So let's get started. Supercapacitors or ultracapacitors. Basically, in general, these are the energy storing devices. Supercapacitor is a capacitor with very high specific capacitance up to 2 kilofarad. Low voltage with high power density. Supercapacitor is a capacitor with very high stability, high energy density, power density, high specific capacitance as I have mentioned up to 2 kilofarad, long life cycle like 10 to 15 years, fast charge discharge process like these can literally store energy in 1 to 10 seconds very quickly, and low cost. These are the some properties of these supercapacitors which make them preferable as compared to the batteries, solar and fuel cells. These devices store energy due to the adsorption and desorption of ions at the electrode-electrolyte interface. Please ignore my handwriting. These devices store electric energy in the form of electrode potential. So, coming towards its working principle, let's check how it works. मैं ये रेस कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, और बेसिकली मैं चाह रही हूँ कि मेरे जो वर्ड्स हैं वो वीडियो में क्लियरली आ रही हूँ. आई होप सो. सो वर्किंग प्रिंसिपल of supercapacitor. It consists of collector, containing cathodic chamber and anionic chamber, cathodic chamber anionic chamber, a separator, which is basically
porous electrode and an electrolyte. So supercapacitors, basically it consists of collector containing cathodic chamber and anionic chamber, a separator which is basically porous electrodes and an electrolyte. So when this collector is connected to battery, it results in the formation of electronic double layer. Electronic double layer. So in general, when this collector is connected to the battery, due to the presence of electrolytic solution, which means that electrolytic solution means that cations and anions and anions, due to the presence of electric current, they move towards the cathodic chamber and anionic chamber, and thus results in the formation of electronic double layer at the cathodic chamber and anionic chamber, and with the result they let to store electric current in the form of the electrode potential. So ये था working principle supercapacitor का. Coming towards its type, basically there are three different types of the supercapacitors. Types of supercapacitor. Number one is the EDLC, electrostatic double layer capacitor. Number second is the pseudocapacitor. And number third is the hybrid capacitor. EDLC, electrostatic double layer capacitors store energy electrostatically, which means that, as I have mentioned before, an electric field is generated at each electrolyte when voltage is applied across the terminal, which causes the polarization of the electrolyte, and as a result ion diffuses towards the electrode of opposite charges, which leads to the formation of the electric double layer. And these devices use electrodes made up of activated carbon, carbon nanotubes and carbon aerogels. Activated carbon, carbon nanotubes and carbon aerogels. While pseudocapacitor stores energy electrochemically, which means that Faraday redox reaction is occurring there, and these devices use electrodes made up of metal oxides, transition metal oxides and conductive polymers. While hybrid capacitor stores energy both electrostatically and electrochemically, which means that
here the electrodes are asymmetric, like one electrode is storing energy electrostatically and the second is storing energy electrochemically. So these are battery types. Asymmetric type like batteries. Pseudocapacitors store more energy as compared to EDLC, and then hybrid store even more. So coming towards the applications of the supercapacitors. Supercapacitors can be used in consumer electronics like computers, laptops and media players. They can be also used in RAM and SRM for backup power, and they can be also used in electric vehicles जहाँ पे उनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, like 10 to 15 years, and they can be used in different fields like military, cranes and forklifts for the lifting of heavy vehicles. So मैंने लिखी नहीं है बट ऑलरेडी बता दी आपको एप्लीकेशन सुपर कैपेसिटर्स की. सो आई जस्ट वांट टू समराइज माय लेक्चर, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ आपको इजी वर्ड्स में. आज हमने जो डिस्कस किया था वो था सुपर कैपेसिटर, अल्ट्रा कैपेसिटर क्या होते हैं एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस, हाई स्टेबिलिटी होती है, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटेंस होती है, 2 किलो फैराड, लॉन्ग लाइफ साइकिल होता है उनका 10 से 15 साल, और उनके फास्ट चार्ज डिस्चार्ज प्रोसेस होता है लाइक 1 to 10 सेकेंड्स, लो कॉस्ट होती है. ये इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं जिस वजह से हम इनको प्रेफर करते हैं बैटरीज और सोलर सेल्स पे. अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल कोट करें तो अगर हम देखें जैसे कि बैटरी है वो हमारे पास एक वाटर टैंक है, उसको फिल करने में भी टाइम लगेगा, मतलब चार्ज होने में भी और डिस्चार्ज होने में भी. इसी तरह से सॉरी बैटरी जो है वो हमारे पास एक वाटर टैंक की समझ लें आप, और जो सुपर कैपेसिटर है वो एक बोतल है तो जिसमें हम जल्दी रैपिड चार्ज कर लेंगे और डिस्चार्ज भी इजीली हो जाएगा हमसे. और इसके अंदर जो हो रही है एनर्जी स्टोरेज टेक प्लेस कर रही है एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ऑफ आयंस एट द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस पे. 3 इसकी टाइप होती हैं. एक हम कहते हैं EDLC इलेक्ट्रोस्टैटिक डबल लेयर, जहाँ पे डबल लेयर की फॉर्मेशन हो रही है, उसके बाद इलेक्ट्रिक डबल लेयर की फॉर्मेशन होती है. दूसरी जो EDLC होता है इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो हमारे पास मेडअप होते हैं वो कार्बन से, एक्टिवेटेड कार्बन से, कार्बन नैनोट्यूब से, कार्बन एरोजेल से. जो कि सेकंड हमारे पास टाइप होती है स्यूडो कैपेसिटर, वो स्टोर करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकली. फ्राडे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और वो इनकी जो डिवाइसेस इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं वो मेडअप होते हैं हमारे पास मेटल ऑक्साइड से, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड से. मेटल ऑक्साइड जैसे कि रिथीनियम ऑक्साइड हो गया जो प्योर मेटल ऑक्साइड है. ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में हमारे पास निकल ऑक्साइड एक्सेट्रा आ जाएगा, और कंडक्टिव पॉलीमर्स. एंड जो हमारे पास हाइब्रिड कैपेसिटर्स हैं वो स्टोर करते हैं एनर्जी बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिकली एंड इलेक्ट्रोकेमिकली, और एसिमेट्रिक टाइप बैटरीज. एंड देन हमने सुपर कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं. आई होप कि ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.